दोस्तों आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। मैं हूं उपमा सिंह और आज मेरे साथ हैं सुपरस्टार पृथ्वीराज सुकुमारन और एक्टर टर्न डायरेक्टर कायोजे ईरानी, जो बात करेंगे अपनी नई फिल्म सरजमीन के बारे में। वेलकम टू नवभारत टाइम्स। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कायोजे, शुरुआत आपसे करूँगी। इनफैक्ट आप दोनों बता सकते हैं कि जो सरजमीन है, इससे जो आपका नाता जुड़ा, जो ये फिल्म है जो आपकी ज़िंदगी में आई, किस तरीके से हुआ? ये फिल्म की एक स्क्रिप्ट का आउटलाइन करण सर ने मुझे भेजा था। एक दिन रात को मुझे भेजा, मैं सुबह को उठ के मैं पढ़ रहा था। एक 50 पेज जैसा एक स्क्रिप्ट था। मैं पेज 25 तक पहुंचा और मैंने तय कर ली कि ये मैं फिल्म कर रहा हूँ, क्योंकि फिल्म एक तो ऑफ कोर्स देयर इज़ पेट्रियटिज्म है, देश है, ऑल ऑफ दैट, लेकिन ये जो फिल्म है ये फिल्म का बैकड्रॉप है। फिल्म का हार्ट जो है ना वो फैमिली है, एक माँ बाप और एक बेटे की। तो मुझे वो बहुत अट्रैक्टिव लगा। तो वही एक बार मैंने वहाँ तक पहुँचा, फिर मैंने बोला चलो कंप्लीट तो करता हूँ। हाँ बोलने से पहले कंप्लीट किए, मैंने करण सर को फ़ोन किया, मेरे को ये फिल्म करनी ही है। और फिर करण सर ने फ़ोन लगाया पृथ्वी सर को। Yeah, I was in Jordan. I was shooting for Goat Life when Karan called me and said, I'm sending you something. When you get some time, can you read it and see if it's something that you'd like to do? So I think it was the same 50 page or something. Yeah, 50 page, yeah. So he sent it to me, and I read it the same day actually, because that day shoot got cancelled because of a sandstorm in Wadiram. And I finished reading it that day evening. I called Karan and said, I want to do it. And when I read the script, it did not have Ibrahim, it did not have Kajol. He just told me it's going to be directed by Kayoze. And I didn't know who he was. So I then went and saw his short film. And I thought, okay, if he can shoot this at least half as well as he shot his short film, then it might be a good film. And how was the experience? Yeah, I think he's done it really well. इस कैरेक्टर में ऐसा क्या था जो आपने नहीं किया था, अब तक एक्सपीरियंस नहीं किया था? See, the biggest mistake an actor can make, especially when you've sort of done a particular number of films and you have this much volume of work behind you, is to keep thinking every film of mine now has to be something that I've never done before. That way your decision making becomes very personal and selfish in a way. I am a true believer that I should always approach my next script not as an actor, not as a director, not as a producer, but as an audience member. I should look at it as a film lover. Is this a film that I'd like to see? You know, that's the first question. And Sarzameen's script was something I really liked. I wanted to see that film when I read it. What I do in the film, what my character is, what do I get to do in it as an actor, that's all secondary. The primary consideration is this a film that you want to see? Having said that, Sarzameen, like Kayoze said, is a human drama. And the thing with human dramas is that you could say the same thing 1,000 different times in 1,000 different ways, and each of those ways will seem new to you. So if you talk about a father-son relationship, or if you talk about a strained husband-wife relationship, or if you talk about the relationship between two men who are still fighting their own devils within, all these are things that you have heard before. Yeah. But there are facets in each of these that are still new, that we are yet to explore, that when you hear, listen or see will still seem like you haven't heard this before. That way, I think there are multiple plot points in Sarzameen that sort of makes you feel like, okay, what I feel when I read this or what I feel when I see this is new. And I hope, people enjoy it the same way. Even when you see a film right now, I just think that it's not about how new is it or is it something that you have seen before. It's about how does that film make you feel. So that way I'm truly excited for Sarzameen. It's a script that I've always believed in, and I'm very, very glad that the film got made the way it did. And come 25th, I really hope people share this same excitement as we do. जैसा जो पृथ्वीराज ने बोला कि ये जो ट्रोप्स हैं, ये जो चीज़ें हैं, रिलेशनशिप अगर बात कर रहे हैं या नेशनैलिटी की बात कर रहे हैं, ये चीज़ें कहीं ना कहीं बनी हैं, देखी हैं, तो इसमें फिर आपका चैलेंज मेरे हिसाब से और बढ़ जाता है कि आप उसको किस तरीके से ऐसे बनाएं कि वो अलग लगे, नया लगे। कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? क्या है कि सबसे बड़ा आपका फिल्म का किंग जो है ना वो है आपका स्क्रिप्ट, सबसे बड़ा। उसके बाद आप सेट पे जाके जो भी करो, the script will always dictate how the film goes.
तो हमारे जो दो राइटर्स हैं सोमिल और अरुण, they had genuinely written a very engaging, on the edge of your seat, always moving kind of script. So the minute that had come to me, so I always felt that there's something new to tell. There is the challenge. The challenge was for me that how to live up to what the script is. Do you, as a director, do you take the film below or do you take the film up? तो कोशिश वही रही है कि आई ट्राई टू एलिवेट द फिल्म फ्रॉम द मटेरियल ऑन पेपर विच इज ऑलरेडी एट अ हाई लेवल, एंड आई नो इट इज एट अ हाई लेवल बिकॉज टू huge stalwarts in Kajol and Prithvi sir said yes to the film that evening. Both said, heard the film, and by evening उन दोनों ने हाँ बोल दिए ये फिल्म करने के लिए. तो मेरा वही मेन चैलेंज था कि ये जो अभी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, नया लड़का है और ये जो स्क्रिप्ट है, आई टू डिलीवर ऑन दैट वाज माय मेन थिंग. और क्या है कि यू डोंट नो व्हाट द एंड रिजल्ट इज. मुझे पता नहीं कि जुलाई 25 के बाद किसी को फिल्म पसंद आएगी या पसंद नहीं आएगी, लेकिन हमने पूरी कोशिश, जितना खून पसीना लगा सकते थे हम लोग ने लगा दी है फिल्म में. और मेरा दिल कहता है कि फिल्म अच्छी चलेगी, और सबसे ज़्यादा अगर लोग को ये फिल्म खुश बनाएगी और ये फिल्म लोग के साथ रहेगा पोस्ट वॉचिंग द फिल्म, आई विल बी वेरी हैप्पी. जैसे आप खुद को चैलेंज करते हैं, चाहे वो द गोट लाइफ में एज एन एक्टर हो या लूसीफर 12-2 में एज अ डायरेक्टर हो, इसमें आपके लिए कुछ चैलेंजिंग था? My idea about cinema is not to challenge myself. My idea about cinema is that if I'm in it as an actor, is to try and facilitate the director's vision in the best possible way that I can. Now, Vijay Menon is a character that the writers and Kayose have already conceived, and they're trusting their conception of the character with me. And now it's up to me to make sure that I sort of live up to Kayose's vision of the character and the film. Yes, as an actor, I have my own interpretations about it, which then I discuss with the filmmaker, I discuss with the writers. But it's not about how much am I challenging myself. It's about am I facilitating the filmmaker's vision. That's all that there is to it. And as a filmmaker, the same equation happens with the writer. My writer has written something, and now I have imagined something from those written words. Now, then do I now, like Kayose said, facilitate and enhance my writer's vision is what I try and do as a filmmaker. So I don't think cinema is about challenging yourself or challenging anybody. It's a team sport. But sorry if I cut. No, it's a team sport. I mean, I'm not sitting here thinking, okay, now how do I challenge myself next? That's not how I look at cinema. Yeah. Okay, no, like mostly creative people or the like artists, वो ऐसा होता है कि अब मुझे और कुछ खुद को चैलेंज करना है, मैंने ये चीज़ें कर ली हैं. You don't think like that? Then I must not be very creative, because for me it's not about, okay, now I need to challenge myself. For me, I'm just hoping now I get a really good next script. The next script I do might be a wonderful piece of cinema, where as an actor I might not have anything in it that I have not done before. But I'm still going to do it because it gives me an opportunity to facilitate and create a great piece of cinema. That's how I look at it. I mean, it might be personal. I'm sure different people have different ways to look at it. But that's how I look at it. Yeah. अच्छा, ये जो फिल्म है, जैसा आपने भी बोला कि ये एक फादर सन के बॉन्ड पर इसका जो न्यू है वो पिता और बेटे का रिश्ता है. आप दोनों लोगों के फादर इंडस्ट्री में रहे हैं. मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग का जो बॉन्ड रहा है विद योर फादर एंड आपकी जो चॉइसेस रही हैं सिनेमा में आने के लिए, बिकॉज आपके पिताजी भी एक्टर हैं, आपके भी फादर बमन सर एक्टर हैं, तो वो कितना इन्फ्लुएंस रहा इस बात का आप लोगों पर, आपके चॉइसेस को लेकर? सच बोलो तो मुझे ये इंडस्ट्री में हिस्सा लेना था बिफोर माय फादर बिकेम एन एक्टर. अच्छा. पापा तो एक्चुअली एज ऑफ 45 पे एक्टर बने, उसके पहले तो वो फोटोग्राफर थे. जी. लेकिन मुझे एक डायरेक्टर बनना था. इनिशियली तो मैं सोच रहा था कि मैं एड फिल्म डायरेक्टर करूँ, फिर मैं एडिटर बनूंगा, फिर फिल्मों के लिए मैंने सोचा. तो आई वॉज वेरी कीन ऑन बीइंग अ डायरेक्टर. और पापा तो आए एट द एज ऑफ 45 विथ मुन्ना भाई MBBS, राइट. तो मैंने तो वो मौका भी लिया और मैं तो वो सेट पे चला गया और मैं रोज़ बैठ के देखते रहता था ऑन द सेट्स ऑफ मुन्ना भाई विथ राजू सर. फिर मैं AD भी रहा ऑन 3 Idiots. तो क्या है कि what is nice now is that in the house with my father we are both lovers of cinema.
तो हम लोग फिल्म साथ में देखते हैं, हम डिस्कस करते हैं। और पहले जो होता था कि एक नाउ अभी ज़्यादा नहीं होता है, बट पहले हम लोग DVDs खरीदते थे फिल्म के, और पापा और मैं साथ में फिल्म देखते थे, और फिल्म ख़त्म होते ही वापस शुरू करते, और तभी डायरेक्टर्स कमेंट्री आता था DVD में, अभी नहीं आता है, तो वो वापस देखते थे। तो वी यूज़ टू ऑलवेज एन्जॉय दैट प्रोसेस ऑफ लर्निंग समथिंग न्यू, क्योंकि पापा को भी हमेशा से राइटिंग में बहुत बहुत प्यार था, और उसके बाद उनको डायरेक्शन भी करना था, और मुझे पहले से ही, तो वी वर ऑलवेज ऑन द सेम पेज इन दैट। बट कैसे फिर आपका ये रुझान किस तरह से हुआ था डायरेक्शन Sorry? की ओर? रुझान जो आपका था, जो आपकी इंटरेस्ट था टुवर्ड्स डायरेक्शन, वो कैसे हुआ? मैं स्कूल में था, और मैं गया एक फिल्म देखने के लिए, जुरासिक पार्क। ओके। और तभी मुझे लगा कि ये जो डायरेक्टर है, मुझे तभी नाम भी नहीं था उनका, फिर पता चला स्टीवन स्पीलबर्ग है। ये जो डायरेक्टर है, उन्होंने अपनी खुद की एक दुनिया बना ली, और मैं चाहता था कि आई वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट, मेरा आई वॉज हाईली डिसलेक्सिक, एंड आई मतलब सेकेंड लास्ट या लास्ट, ये मेरा था। लेकिन जो प्रोजेक्ट्स आते थे, स्पेशली टू डू विथ एडिटिंग और एनीथिंग लाइक दैट, वो ऑलवेज यूज्ड टू एक्साइट मी। तो जब मैंने फिल्म देखी जुरासिक पार्क, मैंने देखा कि ये जो डायरेक्टर है, उन्होंने खुद का एक दुनिया बनाया है, तो मैं भी वही चाहता हूँ। माई हैप्पीनेस इन लाइफ हैज़ कम फ्रॉम सिनेमा, सो मेरा मंदिर जो है वो सिनेमा है। पृथ्वी? I was purely accidental, to be honest. I had sort of completely set my sights on something else. I didn't know what. I was doing my undergraduation in Australia, in a university there, and I came back for a summer vacation. And I was here, and when I was in Kerala during that summer vacation, all the rage was a film called Ravana Prabhu that starred Mohanlal sir. Directed by a writer who just turned director called Ranjit. It was his first film as a director, and the film was a blockbuster smash hit. And everyone was talking about that film. And one day I get a call from Ranjit sir saying that I'm doing my next film. I heard you're, in India now. Would you like to act in the film? So I said no. I have to. It's a 3-month vacation, so I have to go back. I'm rejoin college. So he told me, yeah, I'll finish the film way before that. So if you want, you can come and act and go. So I was like already getting bored at home actually. So the vacation had started and was 20 days and I'm thinking what to do. So I went and I thought, okay, it's like a nice summer job to have. So I did that one film and then never went back to college. बट इसमें एक डायलॉग है बड़ा प्यारा सा कि मतलब माँ जितना भी प्यार दे, बेटा पिता की तरह ही बनना चाहता है। तो वो कोई क्वालिटी या कोई खूबियाँ ऐसी थी जो आप लोगों ने लेने की कोशिश की अपने फादर से? क्वालिटी जो उनका प्रोफेशनल क्वालिटीज़ है, जो एज एन एक्टर, एज अ आर्टिस्ट, एज अ स्टार, वो सब अलग है। आई एक्चुअली वांट टू बी द ह्यूमन बीइंग ही इज़। तो जो वो घर पे है, जो मैं रोज़ देखता हूँ, जो हम लोग डिनर के टाइम देखते हैं, दैट इज़ द मैन आई वांट टू बी। तो जब ये जो लाइन है, इट्स वेरी पर्सनल टू मी कि मैं तो ममाज बॉय हूँ, और लेकिन आई होल्ड हिम इन वेरी हाई रिगार्ड एज अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि एंड दैट इज, अगर आप एक दो लाइन में बताएं कि जो घर पे आप जो देखते हैं उससे आपका जो क्या मतलब है? ही इज़ घर पे तो मतलब पहले तो कॉमेडी शो होता है ज़्यादातर, ही होल्ड्स द होल थिंग टुगेदर, बट इट्स नॉट दैट, इट्स काइंडनेस। इट इज़, आई रिमेंबर कि हम लोग जब छोटे थे, माई डैड जस्ट स्टार्टेड डूइंग, आई थिंक Dawn 1 ही वाज शूटिंग, और उनका अरमान था कि हम लोग सब फैमिली ट्रिप पे जाए। एंड नॉट ओनली डिड ही टेक एवरीवन ऑन द फैमिली ट्रिप, ही टुक his mother, he took his in-laws, my mother's parents, on their first time ever sitting on a plane, business class, to Malaysia for a 5-star holiday. And everyone said, why are you wasting all this money? He said, nahi, mujhe ye mera, this is what I worked for, this is what I want to do. On that holiday, my brother and myself said that, one day we will do this. So that is who we want to be. When I'm on set and I come back from shoot, mom will say ki, kya hua? What is this? Dad will say, you didn't yell now on set. You were nice now. I said, yeah. Then I'll go. And but so in that moment I said, well, I'm not yelling on set, stop it. But it stays with you. It stays with you. You want to be a
a kinder, a nicer person, and I really feel that my father is. And strangely, my father has never met his father. So his father passed away when he was in his mother's womb. So he has never had that experience. So, but even after that, I get to experience such a fantastic father, human being, an artist, so the whole world knows. So I don't have to talk about that. Yeah. I mean, similar things in a different way because, my dad passed away when I was not yet 14, I think. So, yeah, when I was 14 actually. And I had not yet discovered who he was as an actor or a star because I didn't grow up watching a lot of cinema. I didn't have that kind of a childhood. My brother and myself, we were not kids who spent a lot of time on film sets or anything. But my dad was also a teacher. He was an English teacher and he was also a lawyer. So we were more exposed to that side of him as an academician. I was always in awe of his appetite for knowledge, how voracious a reader he was. And most of all, now that I'm an actor, and I look back on my memories about my father, I think one of the most vital lessons that I can take away from whatever time I had with my dad is that it's very important to be constantly in touch with who you really are, especially given the fact that you are in this field of work. Because in cinema, you're constantly trying to be someone else, and I don't just mean in front of the camera. Even outside the camera, you're constantly trying to be different people for different people around you and for different things around you. You're posing for the cameras. I'm speaking to you right now on this interview. These are all things that are not really who you are really, So it's very important to be in touch with your own personality and in a way be a bit narcissistic, be in love with yourself, or else it's very easy to lose who you really are. So that's a lesson that I've carried, very dear to me. Yeah. एंड पृथ्वी, आपने जो हिंदी सिनेमा, जैसे आज हम बहुत पैन इंडिया की बातें होती है, पैन इंडिया सिनेमा की, आपने 2012 में अय्या की थी, राइट? फिर आपने औरंगजेब की, फिर बड़े मियाँ छोटे मियाँ अभी की. अगर मैं बोलूँ हिंदी सिनेमा से जो आपका जुड़ाव कहूँ या आपकी जर्नी है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? That's the thing, right? I mean, maybe because I started doing cinema in other languages outside of Malayalam before this pan-India thing was invented. For me, it's not even like a special thing anymore. It's like I was saying, I came here from the sets of a Telugu film. I'm promoting a Hindi film, and tomorrow I'm off to shoot a Malayalam film. So for me, it's all the same in the sense that it's not like an event and then come in a couple of months I'm shooting another Hindi film. So it's not like, okay, now I'm a pan-India thing. So it doesn't make any difference to me. कभी इस चीज़ का मना लेता है कि ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पे उतनी बड़ी कामयाब नहीं हुई हिंदी वाली? I mean, I've had so many disasters and flops in Malayalam. I've had so many films that have not worked. I've had films that have not worked in Telugu, in Tamil. So I've learned it. I'm experienced enough to now understand that there is nothing you can do about it except while you're making it. While you're making a film, while you're promoting a film, you give your absolute 100% to it. And then once the film has released, there'll be lessons to learn from the results, but then you walk away from it. So on the 25th of July, whatever happens, the 26th of July is not going to be any different for me. I'm experienced enough to understand that. So I'm not really thinking or bothered about the fact that, I've not had that blockbuster like I've had in Malayalam, in Hindi, or the last Telugu film I did was like this pan-Indian super hit, so now I have to create a pan-Indian. It's not right. Maybe it's a wrong way to think, but that's the way I think. Yeah. लास्टली एक चीज़ और जानना चाहूँगी मैं आप दोनों से, पहले आपसे कि जैसे एक तरफ आप काजोल जी एंड पृथ्वीराज जैसे मंझे हुए कलाकारों के साथ काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ इब्राहिम है जो फेयरली न्यू हैं जी. उनको दोनों को डायरेक्ट करने का, उनको ट्रीट करने का किस तरीके से आपका जो मतलब तरीका था वो किस तरह से अलग था? कितनी गाइडेंस मिली इन लोगों से आपको? देखिए, इब्राहिम जैसे आप जानते हो, एक्चुअली ये सरजमीन जो है उन्होंने पहले सरजमीन शूट की थी, क्योंकि हम लोग ने एक्चुअली फिल्म डिले हो गई इंजरी की वजह से. तो इब्राहिम का पहला दिन सेट पे सरजमीन था. और पृथ्वी सर हो, काजोल मैम हो, इब्राहिम हो या सपोर्टिंग कास्ट जो भी हो, I feel as a director I need to adapt to them.
so that they get the best version that they require. Some people respond differently. Someone responds in a different way, and how you direct a person is different. Abhi with Kajol ma'am and Prithvi sir, honestly, I don't have to direct that much. They know what I wanted. Prithvi sir and I had multiple discussion. बता दिया कि ये है. On set इधर उधर सर आके एक suggestion देंगे, ऐसे करेंगे, and it was easy. With Ibrahim actually set पे जो है हम लोग ने ज़्यादा कुछ नहीं किया, क्योंकि on set he was very well prepared. हम लोग ने 1 साल पहले पूरा मेहनत किया, वर्कशॉप किया, वो कैरेक्टर को समझा, वो खुद अपनी ज़िंदगी से कैरेक्टर के लिए कुछ लाया, और आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड एंड वेरी हैप्पी विथ हिज परफॉर्मेंस. और क्या है कि देखो, मेरे बोलने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ऑडियंस बोलेगी. तो 25 जुलाई को उसके जो भी ट्रोलर्स है, जो भी नेगेटिविटी है, मेरे हिसाब से ही विल प्रूव देम रॉन्ग, एंड इफ नॉट ही विल वर्क हार्डर. होपफुली इफ द वर्ल्ड इज काइंड टू गिव हिम अनदर फिल्म, ही विल वर्क हार्डर एंड डू दैट. तो हम लोग ने ऑनेस्टी से, मेहनत से पूरी कोशिश की है टू पुट द बेस्ट वर्जन ऑफ हिमसेल्फ एंड द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ. मेरे लिए भी द स्टेक्स आर हाई, इट्स माई डेब्यू फिल्म. तो बट आवर बॉसेस आर सिटिंग एट होम एंड गोना वॉच दिस फिल्म ऑन द टेलीविजन. तो उन लोग तय करेंगे कि क्या ये डायरेक्टर और ये एक्टर टिकेंगे या नहीं. तो आपके लिए जैसे एक तरफ आप कायो जैसे डेब्यूटेंट के साथ काम करते हैं, एंड दूसरी तरफ राजा मौली जैसे दिग्गज डायरेक्टर के साथ काम करते हैं, तो किस तरह से एज एन एक्टर आपका अप्रोच अलग रहता है? It's the same. It's absolutely the same. On either of these sets, my endeavor as an actor is to understand the director's vision and try my best to facilitate that vision in my capacity as an actor. So, be it an S.S. Rajamouli film or be it a debutant's film, there is zero difference in that. Yeah. All the very best. Pleasure talking to you. Thank you. But I really loved listening to you, the way you explained and the answer. Thank you so much. Yeah.